Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. It's 9th April. The day is Friday. Today we are going to complete the second half of the chapter, that's the brain and nerves. It's on page number 5 of your journal science box. So please take out your box. Okay children, that day we read about the nervous system, which includes the brain, nerves and the sense organs. So I explained you the parts of the brain, what does it look like, what does it feel like, and its different functions. We also talked about the nerves. There were two kinds of nerves, the sensory and the motor nerves, etc., etc. Okay children, today we are going to discuss the reflex action and the sense organs. Now what are reflex actions? Let me explain it to you. Actions where you do not stop to think are known as reflex actions. ठीक है, reflex actions are the unplanned or an involuntary actions. जो अनप्लान, जो आप क्विकली रिएक्ट करते हो किसी चीज़ को, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन. लाइक इट्स अ सडन रिस्पॉन्स. ठीक है, अचानक से रिस्पॉन्ड करना. इट कुड बी एनी थिंग लाइक इफ़ यू एब्रप्टली विड्रॉ योर हैंड, लाइक इफ़ यू टच समथिंग हॉट और कोल्ड. अगर आप किसी बहुत गर्म या ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हो और फ़ौरन से आप अपना हाथ पीछे करते हो, दिस इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन. उसमें क्या होता है कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन है वो फ़ौरन से जब रिसीव करता है मैसेज, ठीक है, और वो मैसेज आपका जाता है सीधा स्पाइनल कॉर्ड को. फिर स्पाइनल कॉर्ड वापस मैसेज मोटर नर्व्स के थ्रू भेजता है और आप अपना हाथ पीछे करते हो. ठीक है, ऑल दिस इज़ डन इन अ सेकेंड. ये क्विक एक्शन होता है. ठीक है, फ़ौरन आपने किसी चीज़ को टच किया, गर्म चीज़ को, और मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गया, वहाँ से मैसेज वापस आया और आपने रिएक्ट किया. You can also see in this picture, see, this is a sensory nerve. Then the message is conveyed to the spinal cord through these sensory nerves, and the spinal cord sends the message back through the motor nerves. Okay, now let's discuss sense organs. Now we have 5 basic sense organs. You all know that. What are those? Sense of touch, sense of sight, hearing, smell and taste. First of all, we are going to discuss eyes. Okay, we all know that eyes provide us the sense of sight. Okay, not only to human beings but animals, birds, fishes, etc. And we also know that human beings, they have various eye colors, and you know that eyes are protected by the bones and eyelids of the skin. Now there are different parts of an eye. Please look at this picture. Is this picture clear to you? Look at this picture. The colored part of the eye is the iris. Can you spot it here? And can you see pupil here? Pupil is a hole in the center of the iris, and it allows light to enter the eye. And cornea is the transparent part of the eye. And the optic nerve, what does it do? It carries message to the brain. See, this is an optic nerve. It carries message to the brain. Now let's discuss nose. We all know that the organ for the sense of smell is the nose, and we all have nostrils. We breathe through these nostrils. And another important information is that animals have a stronger sense of smell than human beings. Do you know that? We human beings can smell thousands of various odors and fragrances. हम इंसान जो हैं, हम thousands किस्म की खुशबू जो है वो स्मेल कर सकते हैं. ठीक है, और क्या होता है कि आपके जो नर्व्स हैं ना, ये आपकी ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और फिर आप किसी भी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो. फिर आपको पता चलता है कि is it a fragrance or a odor or what's that. Okay, now let's come to the ear. The organ for the sense of hearing is ears. The outer ear directs sound to a thin membrane. ठीक है, जो आपका आउटर ईयर है, कान का जो बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा है, वो क्या करता है, जैसे ही आपको कोई आवाज़ आती है वो अंदर आपकी थिन मेम्ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है. ठीक है, द ईयर ड्रम, ये आपको जो ईयर ड्रम नज़र आ रहा है ना पिक्चर में,
इसको जाके टच करता है साउंड. साउंड वाइब्रेशंस they then pass on to the inner ear whereas the nerves carry messages to the brain. ठीक है, फिर आपको वहाँ से जो नर्व्स हैं आपकी वो मैसेज ब्रेन तक पहुँचाती हैं और आप कोई भी साउंड सुन सकते हो. लेट्स कम टू द टंग. नाउ यू नो दैट देयर आर टेस्ट बड्स ऑन योर टंग. आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट कैसे पता चलता है? आपकी टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. फूड को भी, फूड से सेंसिटिव होते हैं, केमिकल्स. आप जैसे ही कोई चीज़ खाते हो तो आपको पता चल जाता है कि उसका कैसा टेस्ट है, ठीक है. आपको पता चलता है इज़ इट स्वीट, इट इज़ सॉल्टी, इज़ इट बिटर, ठीक है, आप डिटेक्ट कर लेते हो. नाउ द लास्ट सेंस organ is the skin. Now you know that skin is the largest organ of our body. It is related to the sense of touch. And the skin contains receptors which can detect. क्या होता है, वो क्या क्या डिटेक्ट कर लेते हैं? आपकी स्किन पे रिसेप्टर्स होते हैं. अगर आप किसी चीज़ को टच करते हो या आपको किसी भी चीज़ से पेन होता है या आप प्रेशर फील कर रहे हो या टेम्परेचर है, ये इसका कैसे पता चलता है? आपकी स्किन पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो फील कर लेते हैं और ये आपकी पूरी स्किन में प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या करते हैं? दीज रिसेप्टर्स दे सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन अबाउट द थिंग्स वी टच. ठीक है, आप किसी भी चीज़ को टच करते हो तो ये रिसेप्टर्स आपके ब्रेन तक मैसेज कन्वे करते हैं. ओके, here this chapter comes to an end. That's all for today. Thank you and Allah Hafiz.